एक चीज़ आप unconsciously कर रहे हो जो you've been doing like most of your adult life, right? It's easy to fall into a pattern. That's why we call it a pattern, right? Uh, how patterns क्या होते हैं? It could be a thought pattern. आपकी thoughts कैसे revolve करती हैं? आहिस्ता आहिस्ता thought pattern change करते हैं. Thought pattern के साथ आपका behavior pattern change करता है, and then your habits और वापस आ जाती हैं. Right? So it is a matter of understanding what your patterns are, then choosing something better, right? और वो ही ढूंढना कि it's very difficult, right? So you said that the family is a very big reason, is a very important factor in recovery or of addiction. So you said that they themselves also need to change their behavior with the addict, etc. So how do you deal with that problem? सर सॉरी इंटरप्रेटिंग मैं ऐसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जब आप कह रहे थे आप लम्स में थे और आप ड्रग्स में पड़े थे स्टार्ट हुए थे और ऐसा ऐसा हार्ड ड्रग्स में क्योंकि तो आपके पेरेंट्स को पता नहीं चला कि आप एडिक्ट हो रही हैं या क्या काम कर रही हैं? So my parents knew I was good at hiding it. Addict is very good at hiding all of it, right? मेरे in my household I come from a very liberal sort of household, so alcohol is considered okay, right? So, so I was good at hiding it. Lekin of course they knew that hash was not acceptable, even if alcohol was acceptable. When they did find out about it, you can't hide it always. Jitna marzi aap koshish karo, eventually you can't hide it. It does come out. At one point you stop hiding it because you accept yourself as an addict as well, right? फिर वो they do their bit कि पैसे रोक दिए, गाड़ी देनी बंद कर दी, बाहर जब जा रहे हो तो सब constant calls कि किधर हो ये वो, right? All these things that they think is gonna help, but at that point पे फिर I was addicted, so I found ways, right? Eventually I did steal from my house, चीज़ें मैं जाके बेची to fund it, right? मैं lungs के बाद they thought कि if I go abroad, मैंने transfer ले ली थी to a university in Canada. That's where I got addicted to cocaine. मैं बहुत cocaine की. The way I funded my cocaine addiction was I used to write papers for people. मैं cocaine करता था और मैं उनके paper लिखता था और मुझे they would pay me and I would buy cocaine. And that cycle started. See, so you find ways to fund it because आपका मकसद फिर एक point पे होता है कि you're just looking for the next fix, right? कहाँ से आपको मिलेगा? You're not आपकी जो सारी values वगैरह होती हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता erode हो जाती हैं. Go into a bad black and white meaning you see everything in gray. Everything is justified or you justify it. And the thing is that वो values are still ingrained somewhere inside of you. So वो जो चीज़ कर ली जब आप थोड़े से sober हुए आपके दिमाग में तो वो thought आती है ना कि ये मैं क्या करती है. Sorry, my language skills. लेकिन
उन moments में आप क्या करते हो? Sometimes it becomes too much that you just want to drown it down. You drown it down and it becomes a cycle, right? और एक point where everyone, so from the age of 14 till I was 28, that's 14 years. उस 14 साल में मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की छोड़ने की, महीना छूट जाती थी, बहुत साइकोलॉजिस्ट के पास गया मैं क्या था साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए जाता था बिकॉज माई पेरेंट्स फोर्स मी टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट. The difference between a psychologist and a psychotherapist is a little stark. तो thin सी लाइन है. Psychologist जो होते हैं ना वो आपको कहते हैं अच्छा ये जो behavior change कर दो तो ठीक हो जाएगा. They use a form of therapy called cognitive behavior therapy, right? So आप अपने behavior change करते हो, behavior change करने से आपकी thinking भी change हो जाएगी. That's the purpose. CBT कहलाती है कि वो नहीं काम की because they weren't really seeing me, they were seeing the behavior, right? एंड में एडिक्ट जो होता है, मैंने आइसोलेशन की बात की है, ये सारी जो चीज़ें करता है उससे ही slowly loses ties with friends, right? आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, उनसे पैसे मांग रहे हो, you know, या कभी ड्रंक होकर उनको बहुत कुछ सुना दिया, या कुछ भी करते हैं, slowly people start cutting you off. फैमिली जो पहले आपको मिलती थी आप भी नहीं उनको देख सकते, कज़न्स को, बिकॉज एक ही एज पे हो, वो यहाँ पहुँच गया है और आप वहाँ की वहाँ बैठे हो. यू डोंट वांट टू गो मीट हिम और हर बिकॉज उनको देख के यू विल फील वेरी स्मॉल, राइट? उनसे भी फिर कट ऑफ हो जाता है. एंड में वो लोग रह जाते हैं जो घर में होते हैं, उनसे भी आप कितना जो देखना होता है तो आप मिल लेते हो, वरना आप उनसे भी वो. सो पर्सन डज गेट आइसोलेटेड. what sets human beings apart from other animals? Social. The ability to think. Ability to Realization. Yeah, but foremost we are social animals, human beings. We strive when we are social, right? So interpersonal relationships are very important for everyone. I'm not just talking about addicts, just for everyone. Interpersonal relationships are very important, right? So वो बंदा भूल जाता है कि कैसे करना है अपने रिलेट लोगों से. So group therapy जो हम करते हैं ना, that's our way of forming those things again. So that's why this is a very important method. So you were talking about how after like 14 years your cousins or other people have gone from some place to some place and you're still checking there. So addiction, it puts like a stop into your life. So you're so indulged into this act, etc. So how after 14 years when you've dealt with that, if you're addicted from such an early age and you've been deprived of all that important time for developing and thinking about future and what you want, how do you deal with that? You're just like a new person. So मैं differentiate करता हूँ. Not every addict is dysfunctional. I was a dysfunctional addict कि मैं addiction में काम शाम नहीं कर सकता था, right? There are addicts who are very functional, right? वो सुबह जाते हैं, उठते हैं 8 बजे, काम पे जाते हैं और फिर रात को 8 बजे वापस आते हैं, वो पूरी शराब की बोतल पी जाते हैं, right? और वो सुबह उठ के they repeat the same thing. उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल काम है बिकॉज देर लाइक हम काम तो सारा कर रहे हैं, पैसे तो हम कमा रहे हैं, और वी जस्ट टेकिंग ऑल द बॉक्सेस दैट वी हैव टू टेक, राइट? लेकिन देर स्टिल एडिक्टेड. मेरे से इट वाज इजी बिकॉज आई वाज अ डिसफंक्शनल अल्कोहलिक. ओके, मेरे पास एक पॉइंट आ गया था. द रीज़न दैट आई डिसाइडेड टू गेट सोबर वाज one thing which
almost all addicts deal with is depression, right? मैंने बात की थी ना कि जब आप आइसोलेट कर देते हो, जब अकेले होते हो, उसमें you almost always you do end up feeling very depressed, right? और depression एक level पे होती है, you carry on your addiction, the depression gets deeper, deeper, deeper. It's like that hole of despair inside of you. और वो despair जो है बड़ा हुई जा रहा है. Or it's like that void, right? जिसके अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल है. People medicate, people say antidepressants ले लो, right? Antidepressants क्या करते हैं? Antidepressants all it does is आपकी feelings को numb करती है. So it's not all the things that you've experienced, they're still there. You're just not feeling it as intensely. आपको खुशी भी नहीं होगी. आप चलो sad नहीं हो, लेकिन आप खुश भी नहीं हो. It's like a zombie state. So how did you get it out? So उसमें फिर ये होता है कि तो मैंने जब antidepressant शुरू की, the only way I could feel was if I was drinking, right? So see that cycle. शुरू में चलो 6 महीने मेरी ड्रिंकिंग कम हुई भी थी, एंटीडिप्रेसेंट्स में था, I wasn't as bad, लेकिन I was emotionally a zombie, right? फिर you drink just to feel. लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो well of emotions or those negative emotions, they are inside of you. They were inside of me as well. And it came to a point where it was a matter of if I did quit, I would die. Either drink too much, do some drugs, messy, would overdose. I've had multiple hospital visits because I did too much, right? Or I would just kill myself. So fear of death. So fear of death भी चला जाता है इस point पे, लेकिन वो वापस आए. तो the moment it came back, the fear of death. Fear of death के साथ one thing that awakes is a will to live, right? Fear of death तो है, लेकिन वो will to live नहीं है, right? Will to live is what sort of takes you forward. कि मैंने actually I want to live rather than just exist. तो कैसे कोई मैं motivation? बताता हूँ कैसे. My mother, वो तो my mother took me to she's like अच्छा ये एक therapist से मिलो. मैंने कहा मैं एक therapist से मिला हूँ, क्या बकवास, मैंने नहीं जाना, right? She's like नहीं जाओ. मैंने ठीक है मैं चला जाता हूँ. मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट किया हुआ था, सो मुझे फिर हो रही थी, राइट? गाड़ी का एक्सीडेंट मैंने किया है, तो just to appease her I was like okay I'll go to a therapist. And I go to this therapist expecting कि oh I'll bullshit her, like I bullshit all my therapists, right? She will tell me कि ये behavior change करो, ये करो, वो करो, तो मैं कहूँ हाँ मैं कर दूँगा, you know, because you become an expert at lying. All addicts do. Lying to people and lying to yourself. Please continue. So वो मैं therapist के पास गया and that experience was different because my therapist saw me for who I was underneath all the bullshit. I think after a long time a person actually saw me. So it's that difference between psychologists and psychotherapists. Yeah. The